और मेरी शर्ट? Amazing. And what about my smile? उसके लिए you have to go to Amazing Smile Dental. To get that amazing smile, visit Dr. Nav Panjarat. Be it teeth whitening, porcelain veneers, full porcelain crowns, or any dental procedures, they can make any smile look amazing. 689 East Remington Drive, Sunnyvale. For appointment, call them at 408 739 6520, 408 739 6520, or visit AmazingSmileDental.com. Hello and welcome to Baby Matters on Radio Fundu. I'm your host Sarika. Babies matter to us. In fact, they mean the world to us. So let's talk Baby Matters. दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर उस शो में जिसमें करते हैं हम बेबी से रिलेटेड बातें। और आज का शो बेबीज के बारे में उतना ही रेलेवेंट है जितना एडल्ट्स के बारे में। सो ऑल ऑफ यू कीप लिसनिंग। भाई, ऑर्गेनिक इज द न्यू बज़वर्ड। ऑर्गेनिक ईटिंग, ऑर्गेनिक लिविंग, हेल्दी लिविंग, टीवी शोज इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैगजीन आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, हेल्थ चैनल्स आर प्रोपेगेटिंग हेल्दी लिविंग। तो आज हम कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक, क्यों ज़रूरी है अपने बच्चों को ऑर्गेनिक खाना खिलाना, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू ईट सीजनल, एंड विल ऑल्सो गिव यू फ्यू टिप्स टू लीड अ मोर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक है क्या। तो जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिकली ग्रोन है, इट बेसिकली मीन्स दैट द फूड हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और विदाउट यूजिंग एनी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स जो कि कन्वेंशनल इंडस्ट्रियलाइज एग्रीकल्चर में कॉमन होते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि वाइल सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स आर प्रोहिबिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, natural pesticides may still be assumed. कई लोग ये सोचते हैं कि अगर फार्मर मार्केट से हम कुछ खरीद रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। मोस्ट ऑफ द टाइम a lot of things available in farmers market are pesticide free. तो जब आप जाएं फार्मर्स मार्केट में, उनसे पूछिए क्या ऑर्गेनिक है, क्या नहीं है, क्या पेस्टिसाइड फ्री है। ये जो टर्म है पेस्टिसाइड फ्री, ये थोड़ी सी वेग है। इट कुड मीन सेवरल डिफरेंट थिंग्स। इट कुड मीन दैट द फूड हैज़ बिन ग्रोन विदाउट पेस्टिसाइड्स बट नॉट ग्रोन ऑर्गेनिकली इन अदर वेज। ये भी हो सकता है दैट it has been tested before it reached the market and certified to contain no detectable pesticide residues. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ज़ीरो पेस्टिसाइड्स हैं, ये है कि हो सकता है कि पेस्टिसाइड्स के लेवल लो हैं। But despite these caveats, organically grown food generally does contain significantly lower pesticide residues than conventionally grown food, and food with no pesticides claim often has more residues than organic food, but less than conventionally grown food. So definitely continue to shop at your local farmers market and remember, organic सबसे बेहतर है, उसके बाद pesticide free खाना, और आपकी लास्ट चॉइस होनी चाहिए कन्वेंशनली ग्रोन फूड। तो चलिए, अब मैंने थोड़ा बहुत खुलासा आई होप कर दिया है कि ऑर्गेनिक क्या है, पेस्टिसाइड फ्री क्या है। तो अब बात करते हैं कि बच्चों को ऑर्गेनिक देना क्यों ज़रूरी है। वाई शुड वी वरी अबाउट फीडिंग आवर किड्स ऑर्गेनिक फूड। मैं कई बार कुछ पेरेंट्स को कहते हुए सुनती हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनसे बातचीत करती हूँ इस बारे में, तो समटाइम्स पीपल रिएक्ट दैट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, इट्स ऑल अ फैड, और दैट वी डोंट वांट टू बिकम पैरानॉइड अबाउट ऑल दिस हेल्थ, या कि हम अपने किड्स को ओवर सेंसिटिव नहीं बनाना चाहते, उनकी कुछ इम्यूनिटी ही नहीं रहेगी अगर हम इस तरह से चिंता करते रहे छोटी छोटी बातों की। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ हद तक ये बात सही है, और कुछ चीज़ों में ये बात काफ़ी रेलेवेंट है। ट्रस्ट मी, वो जो आप एंटी बैक्टीरियल जेल दिन में 4-5 बार अपने हाथों पे रगड़ते हैं, वो शायद आपके बच्चों को ज़्यादा नुकसान कर रहा है बजाय इसके कि आपकी मदद करे, आपके बच्चों की मदद करे। यू डूइंग मोर हार्म टू योर चाइल्ड than letting her or him chew on your dirty fingers. Because ये जो antibacterial gel हैं, they kill all the bacteria, good bacteria as well as
bad bacteria. So obviously, how is the child going to develop a healthy immune system if he or she doesn't get some germs? So definitely avoid buying antibacterial products or antibacterial soaps, especially those that contain a particular chemical called triclosan. Pretty much in all situations, I think soap and water is really all you need to clean most things. तो मैं बात ये कर रही थी कि कुछ हद तक ये सही है कि बच्चों की इम्यूनिटी अफेक्ट हो सकती है हमारी हैबिट से, बट जहाँ तक खाने पीने की बात है, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द ओल्ड सेइंग दैट यू आर व्हाट यू ईट is very true. There's a lot of evidence out there, there's a lot of research out there to show that these pesticides and these chemicals can really harm our kids. तो क्यों हम ये चिंता करें? एक तो बात ये है कि जो बच्चे हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फूड्स खाते हैं, विच इंक्रीजेस देयर एक्सपोजर टू स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स. खासकर जब बच्चे 1 या 2 साल के होते हैं, तब तो वो कुछ ही सब्जियां, कुछ ही फल ज़्यादा खाते हैं, सो देयर एक्सपोजर इज़ मोर. दूसरी बात ये कि दे ऑल्सो ईट मोर फूड रिलेटिव टू देयर बॉडी वेट दैन अडल्ट्स डू. सो देयर अगेन देयर एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स अ लिटिल बिट मोर देन अडल्ट्स. और तीसरी बात और बहुत ज़रूरी बात यह है कि दे हैव पुअरली डेवलप्ड सिस्टम्स. अभी उनके सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उनकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये पूरा सिस्टम फुली डेवलप नहीं है. तो अगर बच्चे एब्जॉर्ब कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स मोर इजीली, बट दे आर नॉट एबल टू ब्रेक देम डाउन, दे आर नॉट एबल टू रिमूव देम फ्रॉम देयर सिस्टम, देन ऑब्वियसली वो बॉडी में मौजूद रहेंगे. और पेस्टिसाइड्स मौजूद रहेंगे बॉडी में तो उससे होता यह है कि they'll block the absorption of nutrients that are vital to the growth and development of kids. तो unborn children और children under 3 years old, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इस चीज़ का. They're more likely to be susceptible because of their size and their developing brains and nervous systems. तो ये हम बखूबी जानते हैं कि pesticide can cause permanent changes in brain chemistry. They can lead to behavioral disorders, they can lead to learning disabilities, even long-term damage of the brain and nervous system. तो I hope मैंने आपको कन्विंस कर दिया है कि अगली बार आप ग्रोसरी करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या ऑर्गेनिक अवेलेबल है, क्या इनऑर्गेनिक अवेलेबल है और क्या बच्चों को देना चाहिए. तो अब मैं थोड़ा बहुत बात करूंगी इस बारे में कि कौन सी चीज़ें हैं जो you should try to give organic to your kids, and what are some of the things that you can probably avoid giving organic. और इसका कारण बेसिकली यही है कि कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनके पेस्टिसाइड्स आसानी से निकलते नहीं हैं. तो कुछ यही मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, तो ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द EWG, द एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप, the things that are most affected by pesticides are some of the things जो हमारे बच्चे actually काफ़ी खाते हैं. My own son, he loves some of these fruits जिनमें pesticides बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. जैसे कि most of the berries, strawberries, cherries, blueberries, blackberries, some of these really yummy fruits like peaches and apples and grapes and pears. ये चीज़ें हम बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर काफ़ी ज़्यादा देते हैं. And according to research, these fruits and vegetables actually accumulate a lot of pesticides. Some of the other things I want to mention here are spinach, जो again Indian families में, Indian households में काफ़ी हम use करते हैं because we realize the importance of spinach, but it does have a lot of pesticides. So another example of a vegetable that you definitely want to give organic. पोटैटो है, उसमें कैप्सिकम भी है, सेलरी भी है. इनफैक्ट जो सेलरी स्टॉक्स हैं, दे आर वेरी पोरस, सो दे रिटेन द पेस्टिसाइड्स दैट आर स्प्रेड ऑन देम. सो आप में से लोग जो कि बहुत सारी सेलरी खाते हैं इन द होप टू लूज वेट और just to get a lot of water and fiber in the system, just be very, very careful, and if you can, try to buy it organic. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे चीज़ों के जो ऑर्गेनिक आप बाय कर सकें तो ज़रूर करें, खासकर छोटे बच्चों के लिए घर में.
पर I do realize that budget तो किसी के पास unlimited है नहीं. So I'm going to tell you an example of some of the food items that you can buy non-organic. They are safest to buy non-organic because they don't accumulate a whole lot of pesticides. And some of these are things like avocado, sweet corn, sweet peas, mango, pineapple, kiwi, papaya, watermelon. So अगर आप नोटिस करें, अगर ध्यान दे रहे हैं आप इस लिस्ट पे, तो a lot of these are fruits and vegetables that have a thick skin. So अगर skin थोड़ी सी मोटी है, तो you can kind of safely assume कि वो थोड़ा सा pesticides उनमें कम होंगे. The surprise to me in this list were things like broccoli and tomato and sweet potato. These are also relatively safe to buy non-organic if your budget is limited, which is true for all of us. किसी के पास भी इतना बजट तो नहीं है कि सारी शॉपिंग ऑर्गेनिक करें, बिकॉज unfortunately organic fruits and vegetables are extremely expensive at this point in time. So just remember some of these things like onions, avocados, sweet corn, pineapple, sweet peas, even asparagus, cabbage, eggplant, papaya, broccoli, tomato, sweet potato. ये आप non-organic ले सकते हैं. So, all in all, those of you who are feeding your kids fresh fruits and vegetables, it's a great thing. But just make sure that you're not doing any disservice unknowingly by feeding them veggies and fruits that are loaded with pesticides. And, I realize that a lot of people don't think the expense is justified. In fact, a lot of times the joke you hear around is that Whole Foods should be renamed Whole Paycheck. And I kind of agree with it. एक trip लगाओ Whole Foods की और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या खरीद लिया हो. You definitely end up spending a lot of money. But आजकल तो warehouse stores like Costco have also started stocking a lot of organic choices. So you can get a good pricing by buying in bulk. आपको डिसाइड करना हो और ये लिस्ट जो मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई है आपको याद ना आ रही हो, तो बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की थिन स्किन होती है और या फिर ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनकी हम स्किन कंज्यूम करते हैं टिपिकली फल के साथ ही या वेजिटेबल के साथ ही, वो यू शुड ट्राई टू गेट ऑर्गेनिक. एंड जिनकी थिक स्किन है वो नॉन ऑर्गेनिक आप सेफली थोड़ा यूज़ कर सकते हैं. I was reading this very interesting article. I didn't have the time to validate this completely, but the interesting thing was, how do you really know if you're buying organic? तो ये जो stickers लगे होते हैं fruits and vegetables पे, वो एक 4-digit price lookup code होता है, the PLU code on the product you're about to buy. And basically, if that PLU starts with a 9, it means organic, and it's a 5-digit code. And just the 4-digit code means conventionally grown. That is, there might be pesticides, there might be chemical fertilizers, and things like that. So a conventionally grown banana, for instance, that might have a code of 4011. An organic banana will be a 5-digit, so it'll be a 94011. 9 से start होगा. बड़े interesting है. जाइएगा grocery store next time तो check कीजिएगा सही है कि नहीं सही है. तो अगर आप किसी कारण से ऑर्गेनिक नहीं ले पाते हैं तो यू कैन डू अ फ्यू थिंग्स. ऑफ कोर्स ऑब्वियसली खाने से पहले हम लोग वी वांट टू वॉश आवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रियली वेल. ये ध्यान रखें कि खाने से पहले ही उनको धोइए, just before eating. So washing fruit before storing it in your refrigerator is not good. It can promote bacteria growth on the fruit or vegetable while it's being stored. So धो के फ्रिज में नहीं रखिए. अगर immediately consume करने वाले हैं या immediately पकाने वाले हैं तो वॉश कीजिए. दूसरी बात यह है कि अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो उसकी आउटर लेयर उतारने की कोशिश करिए, उतार दीजिए ताकि एटलीस्ट द मेजॉरिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन द आउटर लेयर्स दे डोंट गेट इनटू योर बॉडी.
जैसे कि लेटस है, सेलरी है, कैबेज है, उनकी आउटर लेयर्स रिमूव कर दीजिए. कुछ फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल्स, पीचेस, कैरेट्स, जिनमें पेस्टिसाइड्स काफ़ी चले जाते हैं, उनकी आउटर लेयर्स रिमूव करने की कोशिश करें. आई नो दैट वी यूजुअली से दैट स्किन में काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, बट अगर न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी आपके अंदर जा रहे हैं तो देन दैट्स नॉट गुड. तो आप ऐसा कर सकते हैं और रिंस भी कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को. रिंस देम अंडर क्लीन कूल वाटर and rinse under running water for several seconds. And please don't use detergent on vegetables and fruit. I was reading some articles कि कई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा उनको डाइल्यूट करके डिटर्जेंट से अच्छी तरह स्क्रब कर लीजिए और फिर वाटर से यूज अच्छी तरह से रिंस कर लीजिए. बट डेफिनेटली द एक्सपर्ट्स डोंट एडवाइज दैट बिकॉज अगेन डिटर्जेंट्स हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स वी डोंट वांट टू गेट इनटू आवर बॉडीज. एंड बहुत ही आसान तरीका वो भी है कि स्क्रब फर्म वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. यू गेट दीज प्लास्टिक ब्रिस्टल्ड वेजिटेबल स्क्रबर्स, यू कैन यूज दोज. तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि पेस्टिसाइड्स का रेसिड्यू आप निकाल देंगे धो के या आउटर लेयर रिमूव करके तो वो वेजिटेबल ऑर्गेनिक बन जाएगा. अनफॉर्चुनेटली देयर आर लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स दैट सीप इन, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग. सो होपफुली ये आप ध्यान रखेंगे अगली बार. तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात चल रही है, तो नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट शुभिता, आवर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, to tell us a little bit about the importance of eating seasonal. हम कैसे healthy रहें, healthier रहें by eating seasonally. शुभिता, welcome to Baby Matters. और बताइए थोड़ा seasonally eating के बारे में. Thank you, Sarika. Actually, food that is locally grown and produced in natural soil using old-fashioned farming methods without using any pesticides, growth hormones, and synthetic fertilizers are mostly seasonal. Seasonally grown foods are fresh, tasty, and nutritious. They keep us in balance. They provide the nourishment which our body needs during that season. So the whole idea is that we should eat the way nature intended. Right. In this context, I would like to recommend this book called 3-Season Diet by Dr. John Douillard, which is based on Ayurvedic principles. The 3-Season Diet by John Douillard. Okay. Yeah. तो क्या कहती है ये book? So it talks about 3 different seasons. Like, I'll be telling you a little bit about each season and how we can incorporate changes in each season. Let's take spring season, for instance. In spring, our digestion slows down. So we need to eat light so that our bodies can cleanse the excess fat and proteins, which we consume more in winter. During spring, we get a variety of leafy greens like spinach, kale, chard, mustard greens. They are naturally low in calories. And low-calorie diet will allow us to burn the excess fat and also will improve the immunity to fight cold and allergies in spring season. And after spring is the summer season. In summer, the days are long and hot. Our bodies require more of cooling and high-energy foods, which means we need high-carb foods which are naturally available in fruits and vegetables. A variety of fruits and vegetables are available in the local markets during summer, such as plums, melons, grapes, cucumbers, zucchini, okra. So eating a lot of fruits and veggies during summer will help us stay cool and energetic. Now, what happens in fall and winter? The weather is dry and cold. Our bodies also gets dry. So we need the fat to lubricate our body, and we want to stay warm. So our body needs a high-protein, high-fat diet during these cold months. This is when the nature provides us with whole grains, nuts, seeds, and they are loaded with minerals, fat, and proteins. So you see, by incorporating these changes in each season, we tend to live in harmony with nature. We also naturally get immune to the changes in every season. So Sarika, in a nutshell, I would say, eat high-protein, high-fat diet in summer, eat low-calorie in spring, and high-carb diet in summer.
Great. Well, thank you so much, Shubhita. This is a great reminder of how we need to live the way nature intended for us to live in each season. तो I'm just a little bit curious. फर्ज कीजिए कि मैं इस मौसम में नट्स खा रही हूँ, आमंड्स खा रही हूँ, कैश्यूज खा रही हूँ, खूब सारे नट्स खा रही हूँ, तो क्या कुछ नुकसान है? Sarika, that's a good point. I'm not saying you should totally avoid proteins and fat in spring and summer. We need proteins, fat, and carbs in every season. Only the proportion varies. Nuts by nature, they are oily and heating, which we need more in winter to keep ourselves warm and lubricated. So you can eat nuts in moderation in spring and summer. And then you can balance it with those foods that are appropriate in that season. All right. So moderation is the key. Yes. Thank you so much, Shubhita. You're These were welcome, some Sarika. great reminders, like I said. And I guess all the more reason to shop at your local farmers market. Food that is grown, produced, and sold locally and seasonally is certainly better for you than, I'm sure, the food that has traveled thousands of miles from farm to plate. So, great. Or if you're looking for some fun activity to do with your kids in this coming season, you can go to this website called pickyourown.org. Pickyourown.org will give you some information about the farms, जहाँ पे आप जा सकते हैं बच्चों के साथ, पूरी family के साथ, make it a picnic, make it an outing. You can do cherry picking, you can do strawberry picking. There are a lot of wonderful fruits that are coming in, so make it a great activity. Now we are going to take a short break and be right back. डार्लिंग, मेरी टाई कैसी लग रही है? Amazing. और मेरी शर्ट? Amazing. And what about my smile? उसके लिए you have to go to Amazing Smile Dental. To get that amazing smile, visit Dr. Nav Panjarat, be it teeth whitening, porcelain veneers, full porcelain crowns, or any dental procedures. They can make any smile look amazing. 689 East Remington Drive, Sunnyvale. For appointment, call them at 408-739-6520, 408-739-6520, or visit AmazingSmileDental.com. आप सुन रहे हैं बेबी मैटर्स और मैं हूं सारिका। हम बातें कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, ऑर्गेनिक खाने की, पेस्टिसाइड फ्री खाने की, और खाने की बातचीत चल रही है। तो अनदर थिंग दैट आई वुड हाईली रेकमेंड एज फार एज फूड प्रोडक्ट्स इज कंसर्न्ड इज दैट आप अपने बच्चों को मिल्क एंड चिकन डेफिनेटली ट्राई टू गिव देम ऑर्गेनिक. नाउ मिल्क naturally contains hormones that are passed along from the animal, from the cow. But what has become worrisome in the recent past is that a large percentage of these cows are treated with RBGH or RBST, which is another hormone that's given to them to stimulate milk production. So definitely milk organic लीजिए if you can, especially younger kids के लिए. You don't want to ingest additional hormones into them, and which can lead to lots of different diseases, and also premature adolescence and premature puberty in girls and boys. Another item to always buy organic is chicken. Basically, the organic label guarantees that certain standards of production are met. Buying organic also prevents the spread of antibiotic-resistant bacteria. जब आप चिकन्स को इंडोर्स बहुत ज़्यादा क्राउड कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो इकट्ठे रह रह के बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, which is why non-organic chicken are given antibiotics. Whereas organic chicken are allowed access to outdoors, free range घूमते हैं वो, and they are not given antibiotics. Also, organic chicken may contain less salt and additives. तो चलिए, ये तो बात हो गई खाने पीने की. अब आप थोड़ा सा अपने स्क्रैच कीजिए ब्रेन्स को, थोड़ा सोचिए कि अगर आप एक नेबरहुड से गुजर रहे हों तो कैसे पता चलेगा कि देसी का घर कौन सा है. सोचिए. तो
चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको, बड़ा ही सिंपल है। एक देसी का घर आप इससे पहचान सकते हैं कि दरवाजे के बाहर चप्पलें और जूते पड़े होते हैं। जी हाँ, ये हमारा ट्रेडिशन कह लीजिए, हैबिट समझ लीजिए, बहुत सालों से चला आ रहा है। A lot of us remove our shoes and slippers outside our home, and that's one area in which we really need to stick to the old ways, because हमारे जूते चप्पलों से इतना गंद, इतने पेस्टिसाइड्स और इतनी पोल्यूशन घर के अंदर आ सकती है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने लॉन्स के लिए, अपने बैकयार्ड को हेल्दी रखने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। सो अवॉइड दैट, कीप लीविंग योर शूज़ एंड स्लिपर्स आउटसाइड योर होम। और एक बात और जहां हमको अपनी थोड़ी सी हैबिट चेंज करनी है, वो है हाउस होल्ड क्लीनर्स। ट्राई टू गो लिटिल बिट ऑर्गेनिक इन दैट एरिया। अगर आप क्लीनर्स ऑर्गेनिक नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वेंटिलेट योर होम अ लॉट, बिकॉज घर के कंस्ट्रक्शन में भी इतने केमिकल्स, पेंट में क्या क्या केमिकल्स और क्या क्या यूज़ होता है, वी डोंट इवन नो। और अगर आपके बच्चे को रेकरिंग कोल्ड्स हो रही हैं, कॉफ्स हो रही हैं, एलर्जीज हो रही हैं, तब तो अपने घर के एनवायरनमेंट का मुआयना करना बहुत ही ज़रूरी है। यू कैन मेक योर ओन cleaners with vinegar and baking soda. You can also buy some indoor plants that help remove indoor pollutants. There are plants like bamboo palm, English ivy, peace lily, golden pothos. So do a search on Google or your choice of search engine, और पता कीजिए कि कौन से plants आप रख सकते हैं। वेंटिलेट करिए घरों को। भाई घर की सफाई हो गई है, ग्रोसरी अच्छी आ गई है, तो अगली बात है खाना पकाने की। अ लॉट ऑफ अस नाउ आर यूजिंग नॉन स्टिक cookware, and this non-stick cookware contains a chemical called PTFE, which breaks down to form toxic fumes when overheated. So look for PTFE-free cookware. Cook in stainless steel, ceramic, or cast iron. Remember that aluminium is also not advisable. और बहुत ज़रूरी बात एक और बताती जाऊँ, हमारे पास टाइम कम है, बट एक और सजेशन जो मैं देना चाहती थी इज़ अबाउट फूड स्टोरेज कंटेनर्स। खाना कभी भी प्लास्टिक के कंटेनर्स में मत स्टोर कीजिए। डेफिनेटली माइक्रोवेव मत करिए प्लास्टिक के कंटेनर्स में। दीज प्लास्टिक्स कंटेन BPA, bisphenol A, which is an endocrine disruptor, or these can leach out of the plastic in the containers and seep into your leftovers. तो आई होप आज की टिप्स आपको अच्छी लगी। आई होप दिस शो हैज़ इंस्पायर्ड यू टू मेक स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल फॉर बेटर हेल्थ फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर किड्स। बी सेफ, बी हेल्दी, एंड अंटिल नेक्स्ट वीक, हैप्पी पेरेंटिंग। मेरी टाई कैसी लग रही है? Amazing. और मेरी शर्ट? Amazing. एंड व्हाट अबाउट माय स्माइल? उसके लिए you have to go to Amazing Smile Dental. To get that amazing smile, visit Dr. Nav Panjarat. Be it teeth whitening, porcelain veneers, full porcelain crowns, or any dental procedures, they can make any smile look amazing. 689 East Remington Drive, Sunnyvale. For appointment, call them at 408-739-6520. 408-739-6520. Or visit AmazingSmileDental.com.